ठीक है, यू माइट बी थिंकिंग सो बिग टर्म्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ऐसा लग रहा है? मुझे वो चाहिए था एक बार। अच्छा ठीक है, मुझे ये देना, स्केड्यूल देना एक बार। तो दूसरे वाले मैम का कैसे समझ आ रहा फिर तो उनका तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उनका तो स्लैंग भी डिफरेंट है। हाँ बोलो। और मिनिस्ट्री बोल रही है कि क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? she this in tourism you are supposed to be outspoken like her, like him, like Joffel. If you are not ready to communicate with the people, it's hard for you to excel, right? Okay, perfect. इसमें ready, all of you ready? Just keep everything away, you don't need to note down anything, right? If you will miss out something, ask your buddy, the one who is sitting on your right or left, to remember that thing कि मुझे ये चीज बाद में याद दिलाना। हाँ बोलो प्लीज, जो आप बोलेंगे वही करेंगे हम। पर दूसरे, मैं यही बोल रहा था कि दूसरे वाले मैम का कैसे समझ आ रहा है फिर? उनका बिल्कुल ही समझ नहीं आया। मास्क हटा दो, मास्क हटा दो प्लीज। क्या? अच्छा, तो मास्क लगाने से जो है आपका स्वेटिंग अंदर ही होगी, तो उससे ज्यादा पेन होगा, ज्यादा खराब होगा, क्यों? है ना? इधर है टीम, इधर आओ आगे, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, आ जाओ तीनों, मास्क एंड टीम आ जाओ। Joffel, ask them to come forward please. इतना अट्रैक्टिव फेस है और ये मास्क से छुपा के रखा हुआ है। जल्दी करो, जल्दी, डोंट टेक टू मच टाइम। आपको इंटरेस्ट आ रहा है इस वर्कशॉप में या नहीं आ रहा, ये बताओ पहले। कोई भी चीज ना बिना दिल के नहीं करनी है, ठीक है? जिसका मन नहीं है वो सो जाओ, ठीक है? जिसका मन नहीं है वो सो जाओ, बट जो है वो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब मैं बैचलर में था, जब मैं बैचलर डिग्री कर रहा था, तो मुझे किसी भी फॉरेन फैकल्टी ने आके नहीं पढ़ाया है। सो यू आर लकी और आई वॉज लकी, बताना। आप बैचलर में नहीं है, तो टेक द एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। दिमाग, कान, आंख, जो 5 सेंसेस है उनको सबको खोल के रखो। ये करो, एक शीशा खोल दो पीछे से, खिड़की खोल दो। एक नहीं खुलता, ये खुलता है यार, हम तो ठीक है, तोड़ ही मत देना। नो लेची स्क्योतले, ऐसे बोलते हैं आने को। कम, जल्दी आओ। तो बिठाने में टाइम निकाल देंगे तो पढ़ेंगे कब हम? ठीक है, लेट्स कम फॉरवर्ड। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू पोक एनीवन नाउ, बट this is not that much happening, right? If you will not participate, it is not going to happen, है ना? Just for the name sake I am just delivering the lecture, then it will happen something like this, ठीक है? 60 slide, if you are going to prepare a presentation of 60 slides, it means you had put some efforts, ठीक है? तो उस पर ध्यान दो, थोड़ा खुल के, पूरे फोकस होके, ठीक है? सो देयर आर 3 words: tourism market research techniques. Tourism market, we have already discussed. What is tourism market?
whenever we are talking about tourism market, it means a common place where seller and buyer are meeting. But tourism market is not something like a shop. You will go there and you are going to get the stuff, right? For example, you are here and you are planning to visit Nepal or Bhutan, that tiger monastery, right? There is, you may recall that, right? There is a monastery in the mountain, that is tiger monastery. You want to visit that monastery, clear? Now what are you supposed to do? You will book your accommodation first, accommodation and then air ticket, right? So you are going to some websites. So in the modern world, OTA is there, or online travel agencies, or some websites are there where you go and access and book your ticket and consume those services. Tourism industry is a service industry, right? For example, pen is a touchable, but service is not a touchable. Intangible, perfect word. Tangible and intangible, right? So when you are buying a copy, when you are buying a pen, when you are buying a bag, it is a product. It is a product and a tangible product. But when you are visiting a doctor, a lecture by a teacher, all these are services. All these are services and intangible. So tourism product is a combination of tangible and intangible services or goods. What are the goods in context of tourism industry? The brochures, the tickets, which are tangible, right? Now come back to this tourism market. Tourism market is a place or space where this buyer and seller exchange, right? Where you find that a service. Clear? Now research word is there. What do you understand by research? The corner girl. रिसर्च जब बोलते हैं ना तो उसका क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं उससे? फोन छोड़ दो, फोन बिल्कुल छोड़ दो, बैग में डालो, फोन बैग में डालो, बैग में, फोन मस्ट बी इनसाइड द बैग. बताओ, जब रिसर्च वर्ड यूज करते हैं तो क्या समझते हैं आप उससे? खोजना. इधर इधर कैप, इधर आओ, सोना नहीं है, इधर आओ, सोने के लिए बुलाया मैंने यहाँ पे, इधर आओ. मुझे गुस्सा भी आता है, पता है, कभी कभी शक्ल तो गुस्से वाली लगती है ना. हाँ तो इधर आओ, फिर आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ. जल्दी करो, हरी अप. इनका सीआर नहीं, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? सेकंड ईयर का कौन है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव तो बनाया होगा क्लास, स्कूल में कोई नहीं है. और फाइनल का टेक केयर ऑफ योर क्लास, एवरीवन मस्ट बी प्रेजेंट, राइट? एंड इफ समवन इज क्रिएटिंग इनडिसिप्लिन, यू विल बी रिस्पांसिबल फॉर दैट. ठीक है, लास्ट में आपको जो एग्जाम होगा उसमें आपको मार्क्स कम मिलेंगे. दिस इज डन. कहां से आप? लेह में, तो ठीक है, वो तो मेरे को पता है. माठो, एमपी साहब के गांव से. चलो ठीक है, गुड. लेट्स गो अहेड. सो व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड रिसर्च, व्हाट इट मींस? टू सर्च अगेन. ग्रेट. एनीथिंग एल्स? एनीवन वांट टू? आपका नाम क्या है? फोन छोड़ दो, मैंने बोला ना, फोन छोड़ दो. बताओ रिसर्च का क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं? रिसर्च सुना तो है, वर्ड तो सुना ना आपने, क्या समझते हैं उससे? पूछना या खोजना. एक बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं. जोरफल बताओ कोई बेसिक एग्जांपल रिसर्च का. मतलब कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, हाँ, तो उसके बारे में दोबारा हम ट्राई टू ब्रिंग चेंजेस. वी वर टॉकिंग अबाउट द एक्टर नेटवर्क थियरी. एक्टर नेटवर्क थियरी में क्या है, हम बात कर रहे थे टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन की, कि टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर करें या डेस्टिनेशन इमेज को कैसे मेजर करें, राइट? ऐसी बात कर रहे थे ना.
तो वो कैसे मेजर करें, कौन सी चीजें हैं, कहां पे किससे पूछें, तो जिससे हमें अपनी बात का जवाब मिल जाए, उसको ही हम बोलते हैं रिसर्च। तो हमने वो रिसर्च किया, इट इज अ रिसर्चिंग, right? For example, after graduation you are going to get admission somewhere, right? To select that institute you will go through different information, then you will reach at one thing with some output, that is research, right? You are going to market, you want to buy a good t-shirt or shirt, right? So you will visit different outlets, right? You are going, you are asking the price, everything, just negotiation, whatever it is going on, right? When you are reaching at that end product, that is research. Clear? Now a bit more technically, it is something to recreate, reassess, or add on in the existing knowledge. It is actually research is a process to create knowledge, to contribute towards the knowledge, to contribute towards the body of knowledge. ठीक है जी? आपने बोला कि यहां से दिल्ली जाने के 3 रास्ते हैं। मैंने बोला, मैं एक रिसर्चर हूं और मैंने बोला यहां से दिल्ली जाने के 3 रास्ते हैं, एक बाया श्रीनगर, एक बाया मनाली और एक बाय एयर। 3 बोला। फिर नहीं, एक रिसर्चर और था, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज देयर, उसने बोला नहीं, बाया जांस्कर भी है। ठीक है, फिर उसने बोला नहीं, इफ यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर ट्रैकिंग रूट्स, देयर आर डिफरेंट, देयर आर मेनी रूट्स टू रीच दिल्ली, राइट? फॉर एग्जाम्पल सोनम वांगचुक, ही लेड दैट पद यात्रा, तो वो तो अलग अलग रूट से गए ना, शॉर्टकट जो पुराना रास्ता था। सो दिस इज एड ऑन थिंग्स टू द बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज क्या था यहाँ पे, कौन सा कैप्सूल, द बिग कैप्सूल क्या था, हाउ टू रीच दिल्ली। तो एडिशंस हैं वो अलग अलग। इसके अलावा अगर आप कुछ कोई नया ऐड कर सकते हैं तो उसको कर दो। क्लियर? गेटिंग माय आंसर? फॉर एग्जांपल बाल्टिस्तान हमारा अपना होता तो यहां से हम बाल्टिस्तान जाते, बाल्टिस्तान से लाहौर और लाहौर से दिल्ली। ठीक है जी? सो दिस इज हाउ यू add on into the things. So now is it clear what is a tourism market research? Tourism market research is how are you going to research about the tourism market? What is needed, what is the trend, how many hotels are in this tourism market, what is the image, everything related to a market. This is a tourism market, and there are different method for this. What are those methods? Those methods are, it can be, those methods basically depends on the individual perspective. For example, मुझे पानी चाहिए था थोड़ा सा। जोर पे गिर जाऊंगा तो उठा लेना मेरे को, ठीक है? देगा। गर्म है तो। So tourism market research is a process. It is a process to understand a market. ठीक है जी? टूरिज्म की जगह हम अगर लगा दें एग्रीकल्चर मार्केट रिसर्च ऑफ लद्दाख, what are you going to search about? Agriculture, right? Similarly, if we are going to talk about apricot market research, what it means, you will try to find what are the different type of apricots you will find in this market, what are the different rates, what is the production rate, and different, everything is related to processing thing, what are the different byproducts of the apricots, right? Similarly, it is regarding the tourism market research also. In the tourism market research, if you are, it is basically how are you going to start a new business in tourism, right? We will discuss all the example in context of Ladakh. So there are 2-3 theories which are important. One is a VCG matrix, another is, you will get it, another is Potter's 5 forces, another is a pestle analysis, right? These are the few key points which are key concept. Band.
Okay. How to shift it? Topics to be covered. It is market research techniques. Blue ocean strategy is there and red ocean strategy is also there, right? And Porter's 5 forces, BCG metrics, and public domain data, right? Blue ocean strategy and red ocean strategy. Blue is something good, red is something dangerous, right? Clear? So these are the two strategies to analyze a market. Like, where shall I invest? Which kind of business I shall start? In context of Ladakh, which kind of tourism is more? Any answer, tourism students? Which type of tourism is more? आपको क्या लगता है? Adventure tourism, be it culture tourism. बताओ बताओ, आपको पूछ रहा हूँ. नेचुरल टूरिज्म, ये कौन सा टूरिज्म है? नेचर बेस्ड टूरिज्म. नेचुरल नहीं, नेचर बेस्ड टूरिज्म इज, यू आर राइट, बट टर्म होता है ना, ठीक है, टर्म होता है कुछ उसके लिए. बताओ, विच टूरिज्म इज मोर? Form and types. When we are talking about the forms, it means inbound, outbound, and domestic. When we are talking about the types, it means adventure tourism, religious tourism, cultural tourism, all these. Got it? So which type of tourism is more in Ladakh? बताओ बताओ, लास्ट में बताओ. आप में से कितने जिन्होंने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला पूरे लेक्चर में सुबह से? है कोई? बोलो, बताओ. हिस्टोरिकल टूरिज्म क्या होता है ये? हिस्टोरिकल, ठीक है. और बौद्ध, स्पोर्ट्स टूरिज्म, ग्रेट. कल्चर टूरिज्म, गुलाम जी, कौन सा टूरिज्म ज्यादा है लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में? कल्चर एंड हेरिटेज. ओके. So this blue ocean strategy and red ocean strategy. So it is basically saying which kind of business, which kind of tourism you should start, which is going to be fruitful for you, which is going to be profitable in the future. For example, if you are going to start electric vehicle charging station, okay, two conditions are there: electric vehicle charging station and petrol pump. Which one is a part of blue ocean strategy and which one is a red ocean? Just general idea. Why did you answer blue for the why did you answer electric for the blue? और नॉइज पोल्यूशन नहीं होता. और कैप, DAF, डेफ, क्या नाम है आपका? आपकी कैप पे क्या लिखा, आपको ये नहीं पता है? बताओ क्या क्वेश्चन था? मैंने बोला आप टीचर की बात नहीं मानते. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, गुड. बताओ क्या करेंगे, कौन सा ब्लू में आएगा, कौन सा रेड में आएगा? बताओ. पता नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कौन सा पता है, मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ, है ना? हाँ कर रहे. नहीं, मुझे सच में नहीं पता. ठीक है. Blue, when we are talking about the blue ocean strategy, it means you are going to start something entrepreneurship, new, something innovative which is going to help the society to grow more, right? Which is eco-friendly, environment friendly, sustainable, at par with your contemporary marketing agendas. We are talking about a sustainable tourism development, eco-tourism, right? Or wellness tourism, something like this, right? Blue is something, blue, when we are talking about the blue ocean, it means something new. You are the new one, you are the almost new one to start that kind of business in that market. For example, at present Elon Musk is leading the electric vehicle market.
right? But for example, if you are going to start a telecom business, then for example you are Jio, right? Right? And I want to start a new telecom company. So this is a red ocean. Red ocean, this ocean of danger is already there for me. There are big sharks in the market, है ना? अगर मैं for example I am going to start the business telecom company, am I able to survive against Jio, है ना? VI Vodafone और Idea ने हाथ खड़े कर दिए, है ना? वो they are saying we will provide the service only this financial year, ठीक है? So that is a red ocean. What is the importance, what is the beauty of this blue ocean? Blue ocean based market, something new to the people, society, and eco-friendly, and more good is in context of society, but what is good for the individual also, that owner, that company? It's something new and there will be there's less competition. For example, when the world started, do you think all these policies, constitution are the things of this present day? It is evolving slowly right from the very beginning of the civilizations. Slowly things are evolving, right? So when you are into new business in innovative business, which are new markets, right? Then you will lead that market. You will tell the policy makers what to do. You lead the policies, right? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है आज की डेट में यूएस में एलन मस्क लीड कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी, एंड इवन ही इज इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अक्रॉस द ग्लोब आल्सो, because he is the new, he is the leading, he's having bigger part of that electric vehicle market. बड़ा बंच उसके पास है, ठीक है? जैसे किसी बड़े होटलर का नाम लो, यहाँ पे कौन है लद्दाख में? ग्रैंड ड्रैगन ले लो, है ना? ग्रैंड ड्रैगन इज द, even though this hospitality business is we will not call it as a part of a blue ocean strategy, but he has that bigger share, but bigger share of a luxury travelers. लग्जरी ट्रैवलर जो है उसका ज्यादा बिग बंच जो लेता है वो लेता है ग्रैंड ड्रैगन, ठीक है? तो कल को वो किसी और को आने देगा यहाँ पे? बताओ, नहीं आने देगा. ही विल डिजाइन द पॉलिसी, शी विल डिजाइन द पॉलिसी अकॉर्डिंग इन हिज फेवर्स, ठीक है? इलेक्ट्रिक जो इनोवेटिव है वो, जब आप ब्लू ओशन स्ट्रेटजी की बात है तो वैसा ही रहता है कॉन्टेक्स्ट. क्लियर? ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, रेड ओशन स्ट्रेटजी, क्लियर? नाइस. Or example, for example, we are going to take the example of tourism industry. Then if you are going to start the bike based tourism, it is a red oceans market, right? But if you are going to start some astro tour activities, wellness tour activities, that is a part of a blue oceans. Clear? Perfect. So these are about the steps we were talking about. Basic differences, these are we have discussed, right? And when you are in blue ocean, risk is low because you are leading the things, you are the no competitor. Yeah, that's why there is no competitor. And in the high risk, because there are more competitors, Jio is already there, VI is already there, right? Getting my point? That's nice. Okay, Potter's 5 forces. रुवीना बताओ, पढ़ा ना पहले? नहीं पढ़ा? Potter's 5 forces, actually it is related to a market, again to a market, and a market survives on these on the basis of these 5 steps. One is your buyer's power, supplier powers, existing rivalry, right? And competitive. Okay, and then we have threat of new entry and a threat of a substitute, right? Ladakh mein no one outsider can start their business. This is a threat of it is a part of threat of a new entry. We are secure in that context, right? We are secure in that context. But do we have such kind of policies in Delhi? No, right? One positive thing. Then we have
competitive rivalry. Now which kind of tourism business you are going to start? I am going to start a chowmin. किसने बोला? Travel agency, bike based tourism, bike based services provided by a travel agency. Then there are already many. So rivalry is low or high? High. You have more competitors. So which kind of business you will start? You will start something kind of a wellness. You will start something new. What is that blue ocean for you? Okay, what is blue ocean for you? This one. What kind of thing you will start? Tourism education is a blue ocean, part of blue ocean or a red ocean? Totally blue. Even though in India this tourism hospitality education started quite before, and this tourism education diploma courses started around 1974 by College of Vocational Studies in Delhi. But now after the arrival of so many central universities and all this, now it is booming. We need more skilled, critical thinker, problem solving based mind setups to cater the needs of a tourism industry, right? So tourism education is if tourism education is a blue ocean part of blue ocean market, then tourism research is also. So if you are going to start a research career in tourism, it is of a bad advantage for you or good advantage? See, so just try to finish your this bachelor master soon and go for research, go for other professions, start your own business. Anyone among you want to start own business? How many of you? Great. कोई नहीं बाकी क्या करना है आप लोगों ने बताओ वेयर आर यू फ्रॉम आर्यन वैली में कहां से दार्चिक गुड मैं गया हूं दार्चिक ठीक है बताओ हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू स्टार्ट ऑन बिजनेस रुबीना हाँ ना बताओ anyone among you do you know there is a women based travel agency in Ladakh how many of you knows good आपका नाम क्या है रिग्जिन आंगमो good बताओ so what are you going to do after bachelor in tourism you thought you will get lots of chance to travel that's why you got admission in tourism right कि क्लास से भी घूम घूम के लगती होंगी है ना दिस इज व्हाट यू थॉट राइट है ना रुबीना रुबीना के साथ तो धोखा हो गया tourism education is quite practical quite interesting it depends on the teacher ठीक है जी it depends upon the teacher how he or she incorporate that knowledge okay so let's come back to the point we discussed about the threat of the new entry like policies what kind of policy criteria is there to enter of toward the entrance of a new competitor in their market clear कि लॉ एंड रेगुलेशन कैसा है हमारे कॉन्टेक्स्ट में अच्छा है लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में आउटसाइडर्स others either foreigners or other national people they cannot come and settle their businesses here right then we have competitive rivalry if you it depends on the type of business which kind of tourism business you are going to start it will decide your competition अब देख लो पूरी क्लास में you are the only one who want to less rivalry कल को यही बनेंगे ना बिजनेसमैन भी so they are not interested it means you will face less competition in future right है कोई is there someone who is going to see पड़ोस में बिठाया कंपटीटर ठीक है so now come to supplier power and then buyer power what it means supplier power and buyer power there are
few companies which supply air fuel, sorry, not air fuel but airlines fuel, right? For example, during winters there are only few vegetable supplier, right? So what can they do? They can fix their own price. लेना है तो लो, नहीं तो. So that is the power of a supplier. Supplier means the one who serves. ठीक है. लद्दाख में क्या है, ड्यूरिंग विंटर्स यू डोंट गेट टीचर्स. विंटर में टीचर नहीं मिलते आपको ना, होम एजुकेशन एंड ऑल दिस. तो क्या है, टीचर्स की जो सेलिंग पावर है वो हाई होगी या कम होगी? सेलिंग पावर सप्लायर हाई होगी. क्यों? सप्लायर कम है, टीचर कम है. ठीक है. सिमिलरली बायर्स पावर, buy, now we will understand the buyer's power in a market. For example, you want to buy a phone. Buyer power will increase when there are less options, right? है ना? Buyer power will decrease when there are more supplier. Decrease or increase? आपने मार्केट में दुपट्टा खरीदने जाना है, ठीक है. मार्केट में 20 दुकानें ज्यादा है, तब आप ज्यादा नेगोशिएट करेंगी कि 5 दुकानें तब ज्यादा नेगोशिएट करोगी? जब 20 दुकानें होंगी ना, यू हैव ऑप्शंस. आप बोलोगे दो ना हो तो दो, नहीं तो मैं अगली दुकान चला. क्लियर? बायर पावर, सप्लायर पावर, क्लियर? ठीक है. देन थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. आपका प्रोडक्ट ऐसा ना हो कि वो सब्स्टिट्यूट हो जाए. ठीक है. लाइक नोकिया ना, नोकिया इज नॉट गुड एग्जांपल, but okay, that is keypad to keypad. Your product is almost same. For example, we drink coffee, right? For example, the prices of coffee increased, then आप बोलोगे रहने दो, चाय पी लूंगा. थ्रेट, आपका प्रोडक्ट कितना इजिली सब्स्टिट्यूट हो रहा है. ठीक है. दैट इज द पावर ऑफ दिस substitution power, right? So which product you will launch in the market which is easily, समझ आ रहा है कुछ? क्या समझ आया? चलो बताओ, अब तक यही बता दो मेरे को. हाँ किया ना, मैं पूछता हूँ क्या समझ आया. बताओ क्या समझ आया. अब बोलना नहीं समझ आया ना. नहीं समझ आया ना? समझ आ गया? थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्री, व्हाट इट मींस? Something new will come and change the product. Buyers will go to the other one. Ease of entry for the competitor. Ease of entry, easiness of entry for new competitor in a market. How easily new competitor can enter. That is what this threat of a new entry Porter's 5 forces talks about. Clear? Clear? अगर ऐसे लिखा होता यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने ये बनाया होगा, एनीबॉडी कैन कम एंड स्टडी टूरिज्म, तब क्या होता? सब आ जाते. बट दे फिक्स सम पॉलिसी कि ओनली अ ग्रेजुएट विद 50% कैन come and take admission. So they are restricting the entry of the peoples into that market, that academics. Clear? आप बताओ. If you will answer this thing, then I will understood. That you, everyone is clear about the concept. हमारी बात है, इसमें एक पॉइंट है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री. इसका क्या मतलब है? बताओ बताओ बताओ. थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री का क्या मतलब है? गुड गुड. हाँ, न्यू मार्केट में नया प्लेयर आना चाहता है. मार्केट में नया प्लेयर आना चाहता है, उसके आने के लिए पॉलिसीज आसान है या टफ है? ठीक है.
कोई मार्केट है, उसमें आने के लिए किसी कॉम्पिटिटर का एंट्री इजी है पॉलिसीज के थ्रू या टफ है, उसी को बोलते हैं हम थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, पॉटर्स 5 फोर्स। राइट, पॉटर एक फिलोसफर था, उसने 5 चीजें बताई थी मार्केट को एनालाइज करने के लिए। क्लियर? वैसे ही आपका कॉम्पिटिटिव राइवलरी है, और कॉम्पिटिटिव राइवलरी ऑलरेडी हाउ मेनी कॉम्पिटिटर्स आर देयर इन योर मार्केट। If you want to be first in the class, then you have to compete with all the competitors, right? So if there are less people who are competing with your more people, right? Buyer power, threat of substitution, all these are there, right? Let's go to the next. BCG is really one of the amazing thing when you have your own business, right? At one point of time in US, almost all the 500 top companies were following this concept. Boston Consultancy Group, right? Alan Jacon was the one who gave this, who came with this concept, and there was other person was Bruce, who popularized this concept. Okay, right? Alan Jacon was the one who gave this concept, basic concept, right? And Bruce was the one who, you cannot read it, but it is Bruce. Okay, Bruce was the one who popularized this concept, and at one point of time almost all the top 500 companies, right, in the US market was following this concept. Okay, this is the basic diagram, paragraph, right? On your left hand side there is growth and there is a market size, market share, right? So on the basis of market share, ज्यादा टफ तो नहीं है, इजी करते हैं, ठीक है? लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में टूरिज्म मार्केट है, टूरिज्म मार्केट को मान लो पूरा 100 है ये, तो उसको हम बोलेंगे मार्केट। 100 है पूरा ना, पूरा 100 है ना, उसको बोलेंगे हम मार्केट। अब ये मार्केट ग्रोथ पे है कि कैसे है, और इसमें इस 100 में से कौन कितना कितना जो है वो लेता है, ठीक है जी? अब उसने क्या उस 100 में से शेयर के हिसाब से, एक्चुअली दे आस्क्ड मी टू गो फॉर हिंदी, ओके है ना, सो दैट्स व्हाई आई एम सॉरी ना, ओके आई एम सॉरी, सो ओके थैंक यू। सो फिर ये 4 कैटेगरी है, 4 अलग अलग जो है वो उसके मार्केट में प्रेजेंस रहती है, कौन कहां पे है, कौन कहां पे है, कौन कहां पे है, मार्केट शेयर के हिसाब से। हमने लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में किया कि मान लो सारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री जितना भी काम कर रही है, एक्चुअली जो टूरिज्म सर्विस है, टूरिज्म मार्केट है, टूरिज्म मार्केट एक्चुअली किसको बोलेंगे हम, जो टूरिज्म के स्टेक होल्डर है वो एक साल में जीडीपी की बात की थी ना हमने, जीडीपी के अवेयर है ना? जीडीपी क्या है? जीडीपी है एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री में या एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती है, उसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट? फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लद्दाख मार्केट, दैट इज 100%। उस 100% में से कौन कितना कितना लेता है, कौन सी लोकेशन होगी ना अलग अलग स्टेक होल्डर्स की। फॉर एग्जांपल देयर इज अ cost stage is there in the matrix, then we have star, we have question mark, and we have a pet, right? When any company, any supplier has cow stage, what it means कि वो मार्केट जो है, मार्केट की ग्रोथ जो है वो लो है, मार्केट की ग्रोथ जो है वो लो है, पर उसका मार्केट शेयर जो है वो ज्यादा है, हाई है। जैसे आज की डेट में टाटा मोटर्स क्या है, टाटा मोटर्स में जो टाटा मोटर्स की जो प्रोडक्शन है वो एटलीस्ट ग्रोथ जो है वो स्लो है, नॉन इलेक्ट्रिक की ग्रोथ स्लो है, बट टाटा मार्केट की मार्केट बहुत बड़ी है, टाटा के ट्रक्स हैं, गाड़ियां हैं, क्या क्या नहीं देता टाटा, ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर? जैसे ग्रैंड ड्रैगन वाला है, आज की डेट में होटल्स की ग्रोथ जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है लद्दाख में, पर उसने मार्केट बनाई है, एक मार्केट का बड़ा क्रंच जो है वो लेता है उसको, दैट इज मिल्किंग काउ। इस स्टेज पे क्या है, जब मार्केट की ग्रोथ कम है पर उस इंडिविजुअल प्लेयर का मार्केट का शेयर जो है वो ज्यादा है,
उस केस में क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कैश काउ, मतलब दैट इज अ सोर्स ऑफ कैश। जैसे बोलते हैं ना कि बुजुर्गों ने, हमारे आर एंसेस्टर्स हैव डन द ग्रेट वर्क, सो हमें बस बैठ के खाना है, बोलते हैं ना ऐसे, मुझे तो बिजनेस मानना बस बैठ के खाना है, सो बैठ के खाना इज दिस कैश काउ। काउ के मिल्क देती है ना, सो इट इज योर माइंड सेटअप, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस मिल्क समवेयर एल्स और नॉट। ठीक है, तो जो बड़ी कंपनीज है, टाटा सन्स, टाटा रिलायंस, राइट, और अदर्स गवर्नमेंट्स एनटीपीसी कंपनीज, they are extracting the profit and they are investing it into other markets। जैसे टाटा सन्स ने क्या किया, जूडियो, ठीक है, अदर्स रिलायंस ने किया अजियो, आ गया ना उसका, ठीक है, दे आर इन्वेस्टिंग द मनी समवेयर एल्स। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हेन योर मार्केट इज अ market growth is low, but that individual company has a bigger share in the market। Clear? Star category is the one when market is also high, market growth is also high, and you are leading that company is leading that market also, share is also high। For example, in context of smartphones, we can say, right, it's a $1 trillion company, right, so they are leading, they are, and at this point of time Tesla is also considered here at star category, because at this point of time you need heavy investment, because you are supposed to keep on going on innovation. When innovation is needed, more investment is desired। Great. When we have question mark stage, market, such kind of companies where you have a low market share but growth rate is high, what are you supposed to do? When growth is high, you are working, for example, you are in a electric vehicle based business, but you are holding small share. In that case, what are you supposed to do? In that case, you are supposed to invest more money so you can bring that thing to star category। Okay, and when we are at पेट को क्या करते हैं आप, पेट से कोई फायदा होता है? पेट को खिला ही रहे, ये खा, ये खा, ये खा। घर पे कैट होती, नींद आ रही है, नहीं आ रही, ये कितने हैं, ये ठीक है, गुड, ठीक है। सो पेट इज द स्टेज, no one wants to be, none of the businessmen want to have their company at this stage। Clear? Clear or all clear? This is the description, sir। Public domain data, what is this public domain data? If I want to ask you one question, how many tourists visited Ladakh? How many tourists visited Ladakh, or how many tourists visited India during last 20 years? From where are you going to get this information? फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, बताओ। अगर लास्ट 20 साल का हमें ये डाटा निकालना है कि इंडिया में कितने टूरिस्ट आए, तो ये इंफॉर्मेशन कहां से मिल सकती है हमें? गूगल से। गुड, गूगल से, पर गूगल में भी तो कुछ ढूंढना पड़ेगा ना। कहां से? सर्च में भी तो कोई वेबसाइट आएगा। गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट, आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म डालेंगे ना, तो यू विल गेट द डिटेल्ड डेटा ऑफ 20 years over there, and this data is paid for you, paid, this data is you are supposed to pay for the data, easily available na। So any data in the public domain which is easily accessible without paying, almost without paying, sometimes you are supposed to pay also, but easily accessible is one term, that is public domain data। Clear? How many hotels are in Ladakh? From where you will get this information? Department of Tourism, you can easily go there, you don't need to pay for them, they will give you the data। Why it is important? Why it is important to have an access to the public domain data? You have this Election Commission of India, they
पब्लिश डिफरेंट डाटा, किसने कितने वोट्स दिए, कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले, राइट। और फिर इन एडिशन टू दिस हाउ मेनी टूरिस्ट आर विजिटिंग इंडिया, what is their origin, na, origin means from where did which country they belongs to, right. So if you have this much of information, what are you going to do with that information, with that data, how it is helpful for you? Gulam ji? Good. So good research. और आया मैसेज है, नहीं आया, फोन, शाबाश, ठीक है। तो so what are you going to do with that data? For example, I am going to ask you, all of you, कि आप कहाँ से कहाँ से कहाँ से, then I came to know in the end all of you, majority of the people are from Leh district. So मैं क्या करूँगा अगली बार, I will target on Kargil to get more admission from there to Leh, क्या, right? So data helps us in analyzing the scenario and to make decisions. अगर घर पे आपने साल का चार्ट बना लिया कि कितनी शुगर पिया हमने, तो यू विल डिसाइड ना, अच्छा 100 किलो खत्म होगी एक साल में, राइट। सो दैट इज नॉट पब्लिक डोमेन डाटा, बट डाटा हेल्प्स अस टू टेक डिसीजंस, इट हेल्प्स अस इन सेविंग टाइम, इट सेविंग मनी, टू स्मूथनिंग द ऑपरेशंस, to predict the future demand also. Okay, so these are the few websites from where you can get the data. Data.gov.in. Okay, foreign tourist arrival from the Ministry of Tourism, right. Statista is also one of the sites from where you can get the data, right. The best of tourism for the best of the birds, right. We can get the information what is best in my country, right. This is what we can, and accordingly we can promote those products, right. IVEF, इंडियन, इसका फुल फॉर्म भूल गया मैं, इंडियन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ फेडरेशन बैंक, हाँ, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन. Okay, very good data they provides you, right. This and this, see, state wise, UT wise, majority of the data is there, right. Then we have Ladakh on the basis of, see, now we have this data. In 2023 there was a 5,25,000 tourists in the country, and among them 36,000 were foreigner, right. There is a difference between foreign tourist arrival and international tourist arrival. There is a difference between international tourist arrival and foreign tourist arrival. Joffel, what is that? What is the difference between foreign tourist arrival and Indian tourist arrival? International tourist arrival and foreign tourist arrival. When we are talking about an international tourist arrival, it means it will include our NRI also, those who are coming back to home. Okay? Huh? And PIO, person of Indian origin, we will not consider them as a foreigners. We will consider them as a local, nahi, international. Government vision 2025 for a union territory. ठीक है? कंट्री ऑफ ओरिजिन के हिसाब से डिसाइड करेंगे फिर, ठीक है मैम. यू हैव ड्यूअल कंट्री सिटीजनशिप, राइट. You have dual country citizenship. Yes. So when you are traveling to Australia from Thailand, then you are considered as international tourist arrival or foreign tourist arrival? I think, yeah, it's a bit hard to answer. She has two passports. Okay, she has two citizenship, Thai and Australia. Okay, so whenever she is visiting Australia, she is part of international tourist arrival. She is not a part of foreign tourist arrival. Okay, this is the basic difference. So UN tourism is there for this international data, right? क्या हुआ? अच्छे हैं बाल, जबरदस्त, ठीक है. समझ आ रहा है कि नींद आ रही है? नींद किस किस को आ रही है? अभी सोने की उम्र नहीं है, मेहनत कर लो. नींद आती, मुझे पता है, हमें भी आती थी, ठीक है.
पर योर एक्शन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू योर ड्रीम। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन ही करनी है फिर सो जाओ, ठीक है, सिर्फ ग्रेजुएशन करनी है फिर सो जाओ। अगर थोड़ा सा आगे जाना है कहीं तो आंखें खोल के पढ़ो। ये ही इज योर स्टूडेंट, सॉरी सीनियर, आई विल से सीनियर मास्टर्स, ही हैज प्रेजेंटेड पेपर इन थाईलैंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, आप लोग सब कर सकते हैं, ऑल ऑफ यू हैव पोटेंशियल। पर पता क्या है, वी डोंट सी द ड्रीम्स टू फ्लाई। जिस दिन आप सपना देखने शुरू कर दोगे ना आगे बढ़ने का, फिर देखना सब कुछ कैसे आता है। सो लेट्स टॉक अबाउट, देयर आर टू कंसेप्ट्स, लेक टूरिज्म एंड सल्फर टूरिज्म। ओके, सल्फर टूरिज्म क्या है? सल्फर, आई विल जस्ट faster, I will go fast with this thing. Sulfur tourism is something, it is related to your hot water spring. Why sulfur term is there? Because when this hot water comes out to the earth's surface, majority of its ingredient is a sulfur, and sulfur is good for your skin. It heals many of the skin disease. Okay, that's why in the academic word the sulfur tourism is used instead of a hot water spring tourism. Clear? Can you develop Ladakh as a sulfur tourism product destination? कैसे? How many destination do you have as a sulfur tourism destination? Panamik, Puga में जलाने लोग, but you are supposed to think, उसको थोड़ा ठंडा करके यूज कर सकते हैं। चुमाथांग और Panamik, Chumathang, or there are three very prominent places for hot water spring. Chumathang around 135 kilometers from here. Then we have Puga. Puga is same, right? All 175 or 185. Then we have Panamik. Panamik is already it's 140 kilometers from Leh, right? No one in Leh provides specialized tour for sulfur tourism. No one. So if you are going to start this business, it is a blue ocean based tourism strategy and you will do wonders. People, this hot water spring bath is not only for the skin disease cure, it gives you spiritual enlightenment also. Kabhi karke just take this swim someday and just feel it. Okay, so basic philosophy, how does it work? There is a sinking water is coming down, like it is raining or glacier water is there, it goes down. There are porous rocks. Porous rocks are the one which through which the water can penetrate and can go down. Okay, it accumulated in under the earth, right? Then there is some faults are there where water got stored. Then it when you go down, the pressure increase, okay, and heat increase. So when it is somewhere in this magma or these regions, the water get warm and it comes out. Okay, when it is getting accumulated down the earth after getting hot, जब पानी गर्म हो गया नीचे और एक पॉन्ड बन गया कहीं ना अंदर ही गर्म पानी का, तो वो जो है वो आपका स्ट्रीम की फॉर्म में आएगा जब बाहर निकलेगा तो, ठीक है, गैप्स बन के आएगा। पर जब कंटिन्यू फ्लो है तो वो स्प्रिंग की फॉर्म में आएगा। ओके, क्लियर और नॉट? ये है बेसिक सा स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। दीज आर दी पोरस रॉक्स, ये ऐसी सी रहती है, ठीक है। वर्ल्ड फेमस हॉट वाटर ब्लू लगून इन आइसलैंड, इट इज वेरी फेमस। ओके, this is the blue lagoon people are doing. So this bluish color is because of the silica. Okay, so world famous. And even though hot water spring resort of Japan are world famous. Okay, this is Himachal, Manikaran. This is Manikaran, and this side it's Vashist. Then we have Khir Ganga. Himachal is also very famous for hot water springs, right? And again this is Gurdwara. And this Vashist is there as a local deity, and inside there is a pond, and then Khir Ganga is
There, Khir Ganga is the best place for trekking also. This is Chumathang, okay. Then we have this from Panamik. We have Puga. In 2017, this picture was clicked. Just imagine. Just imagine. You need to be a amazing storyteller. How to entangle the words, how to beautify the words. You have the best tourism resources in Ladakh. Best. But we are lacking into communication. We are lacking into market research. We are lacking into research. We are lacking into motivation. We are lacking into vision. So many lackings are there. But we have the best places in the world. Just to witness this view, people can spend dollars, millions of dollars. They are ready. But you are supposed to reach that person first. How to target that market? Case of Tattavani Hotel. This is actually nearby my hometown, in second home in Dharamshala. Okay, so that's I just introduced you. It is like they were saying this space is 40 million old. Almost all the places when this turbulence was taking place, when the earth was forming, so all those water springs took place at that time only. Okay, it is not new for about the my. So health is health tourism. It is helping you in a yoga, it is helping you in spirituality, health cure, so many benefits are there, right? And this is very near to Dharamshala. And Shivratri is a very famous festival. Shivratri means a night dedicated to Lord Shiva. Lord Shiva is a kind of destroyer in Indian Hindu mythology, right? This is there. This is the view. You can see the Dhauladar from here, right? And this is me taking bath. Yeah. So these are a few tourists who are visiting. So nearby there is a river also. You can take hot water, also cold water also. It's your options, right? These are the different places nearby that Tattapani. Okay, and people do visit this place. Okay, this is a rock temple, 8th century rock temple. Pandavas. It is assumed that Pandavas built this. Okay, that we have this stadium. Dharamshala International Stadium, right? Then Pong Dams, His Holiness is there. Na? Dharamshala is known as Mini Lhasa. Dharamshala got promoted at the international level because of him only. We must salute him, right? So now we will talk about the lake tourism. What is lake tourism? The type of tourism is defined on the basis of a motive of a traveler. If you want to visit a place with the motive to explore the culture, you are part of cultural tourism. If you are visiting a place with the motive to explore the food, you are part of gastronomical tourism. If you are visiting a place with the motive to explore the stargazing, then you are a part of astrotourism. Great. So in case of lake tourism, you are traveling to a place with a purpose to explore the lake, that geography, geology, flora and fauna around that place. Okay. So basically lake tourism is very famous in US, right? And before that, we must understand what is a lake. Lake is a kind of water body, right? Encircled by earth surface. Okay. It can be low altitude, it can be high altitude also, right? So there is importance in of water in Buddhism also. It is and purification. Either it's Islam, either it's Hinduism, either it's Christianity, either it's Buddhism, Jainism also. In all these religions, this is not tourism, but water is considered as a an element to pure the soul, pure the body. In Islam, before namaz or delivering the namaz, you wash your hands. Same thing is with the when you go to temple. Same thing is with your Christianity also, and across the religion. Right? In the mythology of Buddhism and Hinduism, water is one of the essential component of a human body. So when you are going to promote a tourism product on the basis of these elements, it will always attract a human being, because it attracts. Water attracts human, fire attracts human, air attracts human, earth attracts a human, because these are the basic elements of a human body. Done?
Lake and Hinduism we have already discussed, right? Water and Islam already we talked about. Christianity also. Largest lake in the world is a Caspian Sea, right? Baikal Lake is the deepest, right? Almost 1642 meter deep. Just imagine 1.5 kilometers deep, right? Can you imagine a lake deeper than 1.5 kilometer? यहां से फ्यांग तक लगभग, है ना? Just imagine. So lake tourism we discussed already. Land of 1,000 lakes, Finland. Okay. City of lakes, Udaipur. Right? 7 artificial lakes are there. Okay. Lake Pichola is there. All these are lakes. Human body and elements. That is what we already talked about. 5 elements of body. Buddhism also talk about there are 5 elements and water is one of them. Which monastery is this? And which festival is going on? Great. You are smart. So these are the different lakes: Loktak Lake, Buller Lake, Beta Lake. These are the world famous lakes, right? But in India, Chandrata Lake is there. We have this extreme left top is a Kareri Lake. Then this side it is Manimhesh. It is in Chamba, and many people trek around for 2 or 3 days. Then they reach there for the spiritual purpose, rituals, religious purpose also. Then downside it is Deepak Tal. This is a Rivalsar. All of you are aware about Rivalsar Lake, right? Rivalsar Lake. Rivalsar Lake. Where is Rivalsar Lake? How many of you are Buddhist in the classroom? Huh? Rivalsar, it's in Mandi, right? So Padmasambhava idol is there, right? And which lake is this? Wrong. She is saying, कौन सा लेक है ये? मेपाल लेक. मेपाल. ठीक है. कौन सी है? मेपाल. पेंगोंग लेक है. This is Pangong Lake. If you will confuse them, they will keep it in mind for longer time. This is from the end point. उसको बाद में देख लेना इधर पहले ही. ठीक है? Notice here. क्या था? पेंगोंग लेक. ये एंड पॉइंट से लिया हमने. मान विलेज की तरफ को जाते हैं ना, वहां से लिए, जहां पे लास्ट में चाय वाला है वहां से लिए. मैंने दिस इज माई क्लिक, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा. सो पेंगोंग लेक इज ऑलमोस्ट 50% जो है वो चाइना में आता है, 40% इंडिया में आता है. उसका 10% इज अ कंफ्यूज टेरिटरी. ओके. एट द वाइडेस्ट स्ट्रेच इज 5 किलोमीटर. वाइडेस्ट मींस सबसे लंबा जो पॉइंट स्ट्रेच है उसका रिवर का, सॉरी लेक का, दैट इज एंड दिस इज सॉल्ट लेक, नॉट फ्रेश वाटर लेक. दिस इज मान विलेज. So this is how you can promote lake tourism, right? Marathon. This tourist arrival in the, how to reach Pangong, right? These are the different accommodations at Pangong, right? Activities at Pangong. Any 5 activities. Hurry up. Any 5 activities you can offer to the tourists in Pangong. बताओ जल्दी बताओ. बताओ पेंगोंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज करा सकते हैं, बताओ. हाँ, याक क्या खिलाना है? हाँ. याक राइड क्या? सबको पूछूंगा जल्दी से फटा. हाँ? खाना खिला के, लोकल खाना. वाह बेस्ट. बताओ. बाइक राइडिंग. बताओ जल्दी बताओ. नेक्स्ट कल्चर शो. बेस्ट. क्या? ईटीवी का फुल फॉर्म क्या है? आप बताओ. नेक्स्ट ट्रेडिशनल ड्रेस. नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट. हाँ, नेक्स्ट ट्रेडिशनल
फूड, जोर से बोलो, जोर से। नेक्स्ट, पेंगोंग, इनको क्वेश्चन ही नहीं पता। पेंगोंग लेक पे कौन कौन सी एक्टिविटीज करा सकते हैं आप लोग? याक राइडिंग, बोट, हाँ शाबाश, हाँ, फोटोशूट। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ। क्या? ड्रेस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, हॉर्स राइडिंग, स्कूबा डाइविंग, नेक्स्ट, वाटर पार्क, Wedding destination. क्या? Wedding destination. नोट कमाने के चक्कर में क्या देखना। अब न्यू थिंग फॉर मी, इट इज रियली so many badminton enthusiasts in the world, right? You can offer them this product. You come and, right, you will take care of their 5 A's and amazing, great idea. ताली तो दिल से मार रहा था ना, ठीक है। अब देखना, जो मैंने सोच के लिखे हैं आपने बोले हैं, और अब देखना कौन कौन से हैं। ट्रैकिंग, स्टार गेजिंग, लेक साइड वॉक्स, people love them things, people love those things, they never had such kind of experiences. Bird watching, wildlife tour, sand walk, people love to feel the place, right? What is the experience? These are the experiences. Cycling, right? Volunteer tourism, people wants to go, they want to work voluntarily just to feel the culture, to participate. This is a part of your volunteer tourism, right? You want to contribute to the society. Then we have spirituality is already there, we are talking. Gastronomical tour, you were talking about the local tours, right? So food is a part of this thing, right? Village explorations, those who are coming from the elite cities, elite families, they never felt village life, they never had swimming. Real example from my life, from Delhi University where I'm working. I asked my students, almost 60 students strength is there. I asked them, how many of you have taken the bath in a river? Answer was only 2 or 3 people out of 60. Just imagine, this is the life of a cities, right? So you just feel what can you sell to the people. Done. Thank you so much.